Morning, students of class 5. Students, I am sure all of you are fit, fine and in a cheerful mood, ready for your English class. Students, today I am going to continue with Unit 12, Adjectives of your English grammar book. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 54. Please take out your English grammar books and turn to page number 54, Unit 12, Adjectives. Students, in my last video, I had explained and written the first 6 sentences of exercise 4, that is fill in the blanks with adjectives as indicated in the brackets. Now students, today I'll be continuing and starting with the 7th one. But before I start, let's revise the first 6 sentences of exercise 4 given on page 54, that is fill in the blanks with adjectives as indicated in the bracket. Students, there are blanks given in the sentence and in the bracket. The kind of adjective is mentioned and we need to fill in the blank with the suitable adjective. So, the first sentence was, the dash lady lived in a dash home, and we need to fill this with adjective of quality. So, for lady students, you can fill any of the adjective like old, young, beautiful, pretty upon you. So, the old lady lived in a dash home. Let's write comfortable home. But if you want, you can write beautiful also. So it is up to you that which adjective you use. So the old lady lived in a comfortable home. That's what I had written in the blank of the first sentence. The old lady lived in a comfortable home. And the spelling of comfortable is C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Then the second sentence, dash copy is uncovered, and we need to fill with interrogative adjective. So, whose? Whose, W capital, W-H-O-S-E, whose copy is uncovered. This is the interrogative adjective. Third, I got the dash position in essay writing competition. And we need to fill this with adjective of number. So you can write any position, first, second, third. And I had written first, F-I-R-S-T, first. I got the first position in essay writing competition. Then fourth, dash grapes are sweet. Now we need to fill this with demonstrative adjective. And beta, as we are talking about grapes in this sentence, that's plural. So, humko either we need to write those or these. But as the sentence indicates that dash grapes are sweet, I had written these. Something plural which is nearby. T capital as we are starting the sentence. So, T-H-E-S-E, these grapes are sweet. Then the fifth sentence. Will you give me dash time? And the kind of adjective we need to fill in this is adjective of quantity. What is adjective of quantity, students? Which gives us the answer of how much, where we do not want to show the exact number. So, time, we can write some time, little time, more time. And I had written some, S-O-M-E, some. Will you give me some time? Then, the sixth sentence, dash voices shrill. You can write any of the possessive adjective. Bracket mein beta possessive adjective diya. You can write my, his, her. And I had written my. My voice is shrill. Now, I'll start with the 7th sentence, students. The 7 sentences are hexagon. A hexagon has dash sides
and we need to fill this with adjective of number. Now, students, the sentences, a hexagon has dash sides, or better, we need to fill this with adjective of number. I hope all of you know what a hexagon is, students. All of you are aware कि triangle has got 3 sides. जैसे triangle की बेटा 3 sides होती है, 1, 2, 3. Square की 4 sides होती है, 1, 2, 3, 4, है ना? उसी तरह से hexagon की बेटा 6 sides होती है. How many sides है? जो 6 sides या 6 लाइन मिला के जो फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन. तो हेक्सागन के कितनी साइड्स होती है बेटा? 6 साइड. And we need to fill with adjective of number. So 6 is a number. So we'll write 6. So our sentence will be a hexagon has 6 sides. क्योंकि hexagon 6 sides से मिलके बनता है, इसलिए we have written the number 6. So a hexagon has 6 sides. और आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनना तो आप कोई भी नंबर नहीं डाल सकते, बिकॉज हेक्सागन में जितनी साइड्स है उतने ही डालेंगे. सपोज होता अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स, तो यू वुड हैव रिटन 3 बिकॉज ट्राइंगल तो 3 साइड से मिलके बनता है. अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, तो स्क्वायर के लिए आप कितने साइड्स लिखते बेटा? 4. सो हियर वी हैव रिटन 6. अ हेक्सागन हैज 6 sides. I hope all of you have written, students. Now, please write fast, then I'll erase and write the 8th sentence. A hexagon has 6 sides. Now, the 8th sentence. We love dash parents. And we need to fill this with possessive adjective. Now the sentence is we love dash parents. Now students, we है यहाँ पे, the subject we है और हमको possessive adjective ही fill करना है. So we need to be केयरफुल कि वी है सब्जेक्ट, तो वी के संग जनरली कौन सा ऑब्जेक्ट आता है बेटा? आर. वी लव आर पेरेंट्स, है ना? एवरीबडी लव्स देयर पेरेंट्स, इजंट इट? बट थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा सिंस द सब्जेक्ट इज वी के संग जनरली ऑब्जेक्ट क्या आता है बेटा? आर. एंड हम अपने ही पेरेंट्स को लव करते हैं, इजंट इट? सो यू नीड टू बी केयरफुल दैट वी लव our parents. Got it? We love our parents. We need to fill with possessive adjective. और बेटा keep in mind कि pronoun we के संग हमेशा our object ही आएगा. We subject pronoun है और our आपका object pronoun है. So we love our parents. Whose parent? Our parents. तो our क्या indicate कर रहा है बेटा? Possession. The parents किसके हैं? Our parents. So we love our parents. I hope all of you have written, students. Now, can I erase and write the 9th one? Students, the 9th sentences, they went to the library in dash period. And we need to fill this with adjective of numbers.
Now, they went to the library in dash period. Now you can look at your timetable and then accordingly you can write the period in which you have the library period. It can be first, second, third, fourth, fifth. So let's take it as third. They went to the library in the third period. बेटा कोई भी आप इसमें नंबर डाल सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? थर्ड. दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. सो वी वेंट टू द लाइब्रेरी इन द थर्ड period. This is adjective of number. I hope students, all of you have written. Please write first adjective of number. आपको number ही भरना है. So they went to the library in the third period. Okay. Now I'll erase this and write the 10th sentence. Dash film have you seen recently? Recently beta means abhi haal hi mein, and this you have to fill in with interrogative adjective. So, dash film have you seen recently? Interrogative adjective कौन से हैं? What, whose, which. Now, dash film. What film नहीं हो सकते? Whose में होगा कि आपको किसी पर्सन या कोई पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस का नाम मतलब उससे रिलेटेड होगा. बट which is the appropriate word, वो बताएगा कि आपने कौन सी पिक्चर अभी हाल में मूवी देखी है. So the word will be which. Interrogative adjective, since we are starting the sentence, we'll write with capital W. So which film have you seen recently? कौन सा interrogative आएगा बेटा? Which. Which film have you seen recently? So please write which. I hope students, all of you have done. Now students, we have finished exercise 4th. But before I start the next exercise, students, let's once again revise the 6 kinds of adjectives so that you are able to understand better. Students, what are adjectives? Adjectives are describing words. And there are 6 kinds of adjectives which we have learned in this unit. The first adjective is adjective of quality. An adjective of quality tells us about the quality of a person, place, animal or thing. It describes the age, quality, size, shape, feeling, etc. ये सब क्या है बेटा? Adjective of quality, जो किसी की भी shape, size, एज, फीलिंग्स, क्वालिटी बताए, वो कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी गिव्स अस द आंसर हाउ मच. बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज जनरली यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. एट टाइम्स वी यूज इट विद काउंटेबल नाउन्स वेयर वी डू नॉट वांट टू शो द एग्जैक्ट नंबर. जहां वर्ड्स लाइक सम, लिटिल, मोर, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जहां पे कोई नंबर हम नहीं बताते हैं, जहां पे हम अनकाउंटेबल नाउन्स के संग जनरली यूज करते हैं. द थर्ड एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. यू ऑल्सो कॉल देम एज न्यूमरल एडजेक्टिव. और बेटा न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो है नंबर्स होते हैं. ये आंसर देते हैं हाउ मेनी का. एंड इसमें आप ऑर्डिनल नंबर या कार्डिनल नंबर कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हो. एंड रिमेंबर दे आर ऑलवेज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा बेटा काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं.
Then the fourth kind of adjective is demonstrative adjective. Students, demonstrative adjective point out to the exact person, place or thing. और ये बेटा 4 ही होते हैं. This, that, these, those. And always remember, जब भी this, that, these, those ये चारों वर्ड आएंगे तो इनके पीछे they're always followed by a noun. इनके बाद हमेशा noun होगा. कभी भी सेंटेंस में कहीं भी दिस दैट दीज दोज आए और अगर दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नाउन तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे. फाइन. और ये एग्जैक्ट पॉइंट आउट करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग को. दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर थिंग विच इज नियर बाय. दैट इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर थिंग विच इज फार अवे. दीज किसके लिए यूज करते हैं? फॉर प्लूरल्स विच आर नियर एंड दोज फॉर प्लूरल्स विच आर far away. Then the fifth adjective is interrogative adjective. That is which, what, whose. और बेटा remember interrogative adjectives are always followed by a noun. उनके बाद भी हमेशा noun होगा. तभी वो होंगे. ऐसा नहीं कि किसी भी sentence में if you see which, what, whose and आप सोचो कि this is interrogative adjective. No, they are always followed by a noun. Then the last adjective is possessive adjective. And beta possessive adjectives are also followed by a noun. And ये बता possessions बताते हैं कि a certain things belongs to whom. So these were the 6 adjectives, students. Now students, please turn to page number 55. I'll be starting with exercise 5. But before starting this exercise, you need to know that adjectives can be formed by adding a suffix to a noun, verb or another adjective. Now students, you need to know that how are adjectives formed. Adjectives can be formed. बेटा कुछ adjective कैसे बनते हैं? By adding a suffix. I hope all of you know the suffix. बेटा कोई भी word, suppose comfort एक word है, ठीक है. अब comfort में if I add able लास्ट में, comfort के एंड में if I add able तो ये वर्ड क्या बन जाएगा बेटा? comfortable. ये क्या बन गया? comfortable. This is an adjective. और ये कैसे बना? by adding the suffix able. और बेटा हमेशा याद रखना suffix वर्ड के एंड में ऐड होता है, whereas prefix आप थोड़ा सा उसको दिमाग में रखो. prefix p, p पहले. You just need to keep in mind कि suffix is added at the end of the word, whereas prefix is added before the word. तो suffix हमेशा word के end में ही add होता है. So comfort में ये word था, वर्ब में मैंने क्या ऐड किया? able. तो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव? comfortable. ठीक है. सो सफिक्स हमेशा वर्ड के एंड में ऐड होता है. Now some more examples like honor plus able is equal to honorable. ये एडजेक्टिव बन गया. तो नाउन्स के
वर्ब्स के और अनदर एडजेक्टिव्स के एंड में सफिक्स लगा के हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं. फाइन. सो लाइक ऑनरेबल, कंफर्टेबल. सम मोर एग्जांपल्स. अब बेटा इंडिया, इंडिया में इफ आई एड एन तो क्या हो जाएगा? इंडियन. दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव. ये कैसे बना? नाउन में मैंने क्या लगाया? सफिक्स एन. तो क्या हो गया? इंडिया प्लस एन इज इक्वल टू इंडियन. तो सफिक्स लगा के एन में आप एडजेक्टिव्स बना सकते हैं. फाइन. नाउ सम मोर एग्जांपल. केयर प्लस फुल इज इक्वल टू केयरफुल. केयर में मैंने क्या सफिक्स लगाया? फुल. तो क्या हो गया बेटा? केयरफुल. देन ब्लैक. दिस इज ब्लैक इज एन एडजेक्टिव और ब्लैक में इफ आई एड ISH क्या हो गया बेटा? ब्लैकिश. एडजेक्टिव. यूज प्लस लेस इज इक्वल टू यूजलेस. सो नाउ आप देख सकते हो कि एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स एंड फॉर्मिंग द एडजेक्टिव. सफिक्स क्या है बेटा? जो वर्ड के लास्ट में ऐड होते हैं. प्रीफिक्स पहले ऐड होते हैं, सफिक्स वर्ड के एंड में ऐड होके वी फॉर्म एन एडजेक्टिव. सो आई होप द सफिक्स आर क्लियर टू यू. The adjectives can be formed by adding suffix to a noun, verb and another adjective. Now students, all of you, please turn to page number 53. Page 53. Exercise 5. Match the words and adjectives formed by using them. Students, this is our next exercise that we need to match the words and the adjective. Now students, on the left side the column of word is there and on the right side the column of adjective is there. So the first word given is terror. Now we need to match. So first of all, let's read the 10 words. Terror, beauty, France, science, child, care, day, comfort, faith, fool, danger, hunger. And the adjectives given on the right side are scientific, comfortable, childish, faithful, daily, terrible, hungry, dangerous, beautiful, careful, foolish, French. Now, students, the first word is terror. Now we need to match it with the correct adjective. Now, on the right side, the word given is terrible. Now, terrible कैसे फॉर्म हुआ है बेटा? Terror plus bal is equal to terrible. Got it? Terror
से कौन सा एडजेक्टिव फॉर्म हुआ है बेटा? टेरेबल. सो द फर्स्ट वन मैचेस विद द F1. टेरर, टेरेबल. टेरर, टेरेबल. Now the second one. Beauty. The second adjective is beauty. And beauty matches with the I. That is beautiful. Beauty plus full is equal to beautiful. Beauty plus full is equal to beautiful. तो वर्ड से जो एडजेक्टिव फॉर्म हुआ है दैट इज दिस वर्ड लेफ्ट साइड पे, एंड जो एडजेक्टिव सफिक्स मिला के बन रहे हैं वो क्या है बेटा? राइट साइड पे. वर्ड वॉज ब्यूटी, ब्यूटी में हमने फुल लगाया तो क्या हो गया? ब्यूटीफुल. टेरर में हमने बाल लगाया तो क्या हो गया? टेरिबल. सो टेरर से बेटा कौन सा एडजेक्टिव फॉर्म हुआ? टेरिबल. From beauty, the adjective form is beautiful. Then the third word is France. France से कौन सा बेटा adjective form होगा? L. French. France से कौन सा adjective form हुआ? French. France, French. France, French. Then the fourth one is science. And science से बेटा A, that is scientific. Science से कौन सा एडजेक्टिव फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स? साइंटिफिक. सो टेरर, टेरेबल. ब्यूटी, ब्यूटिफुल. France, French. Science, scientific. I hope students, all of you have written these. Now I'll erase and write the following words and adjectives, students. I hope all of you have written. The first one is terror, terrible. Rather than matching, please write the alphabets in the correct order. Got it? So terror, terrible, beauty, beautiful, France, French, science, scientific. Now I will erase and write the next one. Now the fifth one, student, is child. From child, the adjective form is C. Childish. From the word child, we have formed the adjective childish. Child, childish. And this is the C one. Child plus ish is equal to childish. Then, the sixth one. Care. J. From care plus full is equal to careful. Child में हमने suffix ish ऐड किया तो adjective क्या हो गया? Childish. Care में हमने suffix ful ऐड किया तो क्या हो गया adjective? Careful. Then the seventh. Day. And E. J में आपने ly ILY ऐड किया, y को रिमूव करके तो क्या हो जाएगा? डेली. डे, डेली. डे, डेली. Then the eighth one. Comfort. If you add able to it, it will be comfortable. B. Comfort plus able is equal to comfortable. So, child, childish, care, careful, day, daily, comfort, comfortable. We have formed the adjectives by adding the suffix. In child, we have added ish.
In careful, we have added FUL to the word care. In the word daily, we have removed Y and added ILY. And in comfortable, we have added AB, LED. These are the suffix which are added at the end of the word. Now, I hope all of you have written. Now, write the remaining ones. Now, the ninth one. Faith. The faith plus full is equal to faithful. फेथ में हमने सफिक्स फुल लगाया तो एडजेक्टिव कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? फेथफुल. फेथ, फेथफुल. देन 10 फूल. इफ वी ऐड ISH क्या हो जाएगा बेटा? फुलिश. के फूल, फुलिश. फूल, फुलिश. फूल में ISH ऐड किया तो बेटा क्या हो जाएगा? फुलिश. Then danger, if you add OUS to the word danger, the word form, adjective form will be dangerous. And the last one, that is hunger. Hunger verb है, इससे हम adjective बनाएंगे hunger. So, students, faith, we have added the suffix full, so adjective is faithful. Fool, we have added the suffix ISH, तो क्या हो गया हमारा adjective? Foolish. Danger, we have added the suffix OUS, so the adjective form is dangerous. Then hunger, we have added the suffix Y and removed, we have changed the spelling, Y add करके, तो हंगर से क्या हो गया बेटा? हंगर. सो adjectives can be formed by adding suffix to the noun, verb and another adjective. Students, that's all for today. Thank you students. Do revise all the taught exercises, that is 1 to 5 of adjectives. Thank you students. Have a good day ahead.